ज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का काम करेंगे। शदीद गर्मी और कोयले की किल्लत की वजह से मुल्क की कई रियासतों में बिजली का बहरान गहरा होता जा रहा है। रियासतें बिजली की मांग को पूरा करने के लिए जदोजहद कर रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक 2 घंटे से लेकर 8 घंटे तक बिजली में कटौती की जा रही है। बिजली कटौती से फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है। वहीं राजस्थान में आज वजीर आला अशोक गहलोत जायजा मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग में बिजली कटौती और वाटर सप्लाई जैसे मामले ज़ेर बहस होंगे। ख्याल है कि मुल्क में 70% बिजली कोयले से पैदा की जाती है। were ready to do their work, but the government was like a not gate. When any input flows into the not gate, it gets negated. So many needless compliances and no ease of doing business. But we understand that the government must be like the end gate. While the industry works hard, the government works even harder. I would like to assure you that we will continue to support the industry in future as well. We have taken care to see that the Semicon India program addresses various parts of the ecosystem such as semiconductor fab, display fab, design, assembly, test, marking and packaging of semiconductors. Friends, a new world order is forming and we must seize this opportunity. We have worked hard over the last few years to create an environment that encourages growth. India has the appetite for tech and risk-taking. We have put the odds in your favor as far as possible through a supportive policy environment. We have shown that India means business. Now, it is over to you. Friends, I look forward to practical suggestions from all of you about how we can move towards an India that is hub for semiconductor for the world in the coming years. Through this conference, we aim to engage with domain experts. We will work with stakeholders to understand what more can be done to build a vibrant semiconductor ecosystem. I'm confident that this conference will have rich deliberations which will help steer India into a new future. Thank you. Thank you very much. सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस से पीएम नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे थे। इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का।